that come from? वेलकम बैक टू माय स्ट्रीम। हमारे साथ कॉल पर है मेरे बेस्ट फ्रेंड विनीत और हम वापस से खेलेंगे गेंशिन इम्पैक्ट। No one's joined me on an adventure in ages. और Let's go. मेरे बेस्ट फ्रेंड विनीत की वजह से आज एलॉय मेरे को थोड़ी जल्दी मिल गई है। उसने अपने प्ले स्टेशन अकाउंट के साथ एलॉय को लिंक किया, सो हमें एक नया 5 स्टार कैरेक्टर मिला है। एक स्वॉर्ड मिली है और ये एलॉय। सो कैरेक्टर प्रोफाइल में जाके देखते हैं। वो भी मिला ना उसका। और वो स्वॉर्ड, विंग्स और बो तीनों किसी काम के लिए। क्योंकि वो प्ले स्टेशन पे ओनली इफेक्टिव ऑन प्ले स्टेशन नेटवर्क। बट ठीक है, मिल तो गया ना। तुझे सिर्फ क्या काम आएगा मालूम है? चल ना। मैं तुझे इसमें काम आएगा, क्या बोलते हैं? नहीं, एक्चुअली कुछ भी काम का नहीं है, फिर मिल गया ऐसे ही, पड़े रहने दे। हाँ ठीक है, मैं अब इस पे हामायूमी डाल देगा ना। इस पे हामायूमी मत डाल, रस डाल। तो चाइल्ड को हामायूमी दूं क्या? नहीं, रस मत दे। स्ट्रिंगलेस है तेरे पास? हाँ तो स्ट्रिंगलेस डाल इसमें। ठीक है, फिशल के लिए रखा है। बर्स्ट सपोर्ट है ना ये। वो सिर्फ बर्स्ट स्किल और बर्स्ट सपोर्ट है ये। इसका स्किल फेंकने का हाँ वो मैं क्षमा करना भाभी, हमला बुक ना थोड़ी और बची कर। इसका स्किल फेंकने का, फिर वो बॉम्बलेट्स जमा होता है, वो काजुआ के साथ ये करने का, फिर जैसे वो बर्स्ट मोड में आएगी बर्स्ट डालने का, फिर स्विच करने का। तो स्ट्रिंगलेस बेस्ट है इसके लिए। ओके, सेम वेंटी वाला रूल। Dillion is coming into my world. I'll allow him. You want to come in my world and steal my fish? Go ahead. You can steal my fishes anytime. Off we go. अच्छा, रीटो पे मिलता है इसका। पफर ग्रीन कलर की एक कम पड़ी है। पफर मेरा R3 हो जाता। R3 हो जाता क्या? अच्छा पफर से। हाँ तो रीटो। अच्छा, वो डॉग्स क्या पे जा रहा है तू? हाँ वहाँ पर रहते हैं। इनाजुमा में बहुत जगहों पे है ये पफर। इनाजुमा में 5 जगह है। हाँ Adventure time. कर ले पफर। ये जो टाइगर फिश जो तलवार नाक वाली है, ये इतनी कोई काम की नहीं है। वो सिर्फ तेरे को वो ये उठाने को लगता है। अच्छा, मुझे लगा वो एनपीसी भाग गया। कौन सा? मुझे लगा वो मेरे पीछे एनपीसी खड़ा है, वो पानी में गिर गया। तू था? ओ मैं था। अरे यार, मैंने इनाजुमा वाला नहीं लिया। तूने खरीद भी लिया वो? तीनों हो गए मेरे। क्या बात है, इतना फिशिंग! मैंने अभी तक सिर्फ 100 फिशेस पकड़ी है। मेरे 500 हो गई। और माँ कसम, इतना खेला तू? अरे फुल मजा आता है, पता नहीं मुझे फिशिंग में मजा आया। मेरे को बोर लग रहा है फिशिंग। रेपिटेटिव है, मुझे मालूम है, टाइम पास होता है। बहुत बोर है। What is it? Is it another Paimon? Adventure time. Off we go. Broken. अरे मेरा कंट्रोलर में लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, बार बार आगे शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, इनाजुमा वाला है। हाँ ये लीवे वाला है। और अभी ये वही तो है, ये जो इवेंट है ना, इसमें जो रॉड मिल रहा है ना, वो सब पे भारी वो है। सारे रीजन्स में वैलिड है। हाँ तो ये 3 रॉड्स का कुछ मतलब ही नहीं है। 3 रॉड्स का कुछ भी मतलब नहीं। ठीक है, अभी कहाँ जाना है? पानी में कूदना है?
तू बता। हो गया तेरा पफर फिश का काम? हाँ मुझे एक दो ही चाहिए थी तो हो गए वो। ठीक है चल। मतलब मेरा अभी आर कितना होगा, R3 हो जाएगा तो नहीं R4 हो जाएगा। ओके तो फिर चल तेरे वर्ल्ड में ही चलते हैं और एजडा को हराते हैं। तूने अभी तक अनलॉक नहीं किया उसको? नहीं अभी तक मैंने जोंगली का पहला स्टोरी कंप्लीट नहीं किया। क्या आदमी है रे तू। धीरे धीरे आराम से करूंगा रे। Off we go. अभी मेरे को लीवे का ये इनाजुमा का स्टोरी अच्छा लग रहा है Adventure time. तो मैं सोच रहा हूँ वो स्टोरी पहले कंप्लीट करूँ। अच्छा हाँ मेरा लास्ट चैप्टर 3 बाकी है। मैंने चैप्टर 1 का लास्ट वीक पूरा कंप्लीट किया। चैप्टर 1 और 2 कर दिए मैंने। 2 कब किया मैंने मालूम है, अपडेट होने के बाद 2.1 का अपडेट आया ना उसके बाद मैं चैप्टर 2 किया। और अभी मैं चैप्टर 3 करूंगा, मेरा एग्जाम्स हो जाने थे उसके बाद। ओके इसलिए मैं दूसरा क्वेस्ट वेस्ट भी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इवेंट्स कर रहा हूँ। आई हैव एंटर्ड द लायंस We go. वर्ल्ड। हाँ तू तेरे वर्ल्ड से ही खरीद पाता होगा ना क्या? अरे तुझे किक आउट कर रहा हूँ। क्यों? अच्छा तू कोऑप में नहीं ले पा रहा? सिंगल प्लेयर, हाँ सिंगल प्लेयर पे ही इंटरैक्ट कर सकते हैं उसके साथ। रुक जाता हूँ। नो प्रॉब्लम। तो मैं तब ये फालतू है, आधे एनपीसीज बन जाते, सिर्फ एक बचा अभी रिफाइनमेंट में तो एक मिनट, वो अभी इवेंट के टाइम पे ही कोई फिशेस आ जाएगी बीच में। तेरे को मालूम है ये इवेंट में कोई फिश अनलिमिटेड स्पॉन होती है। हाँ पता है। वो दोनों जगह है, दोनों जगहों पे कोई ना कोई कॉय है, बस फिशेस पकड़ते जा। एक थोड़े टाइम में आ ही जाएगी कोई ना कोई की जगह पे कॉय। हाँ 50 फिश होती है वो रिस्पॉन इवेंट पे। अब भेज। R4 हो गया, अब एक बाकी है, वो अभी इवेंट के टाइम पे हो जाएगा पूरा। R5 कैच, ये इवेंट इसके लिए ही है, कैच तू कर सकता है वरना बहुत वेट करना पड़ता है कैच को अनलॉक करने। Adventure time. चल काजुआ हाय काजुआ देस। एज़्दाहा ये टाइम थंडर और आइस है, इलेक्ट्रो और क्रायो नहीं, इलेक्ट्रो हाँ पायरो। तो बेनी ठीक है फिर। इलेक्ट्रो पायरो, इलेक्ट्रो पायरो है तो कौन लूँ? वाटर तो चाइल्ड है। चल चाइल्ड लेता हूँ इस बार। और हीलिंग के लिए चीची लूँ। क्रायो मेरे दोनों है, तेरे को जीन लेनी है तो जीन ले। जीन मरेगी मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने ही रख। बेनी ठीक है नहीं बट पायरो है ना। हाँ तो चीची ले ले चलेगा, 3 सिर्फ क्रायो बैटरी है पूरा, ठीक है। हाँ सब लड़कियों के साथ एक लौंडा। There are leaves around. वो मैं भी तीसरा ले लेता हूँ। Return to a company. एक फैमिली लग रहा है कि चाइल्ड और गानी और 2 बच्चे। अब ये नहीं, एक मिनट ए भाई फिर मैं मेन डीपीएस हो जाएगा, तू अटैक थोड़ी कर पाएगा। अरे मजाक कर रहा था मैं। वैसा मेरी बिल्ड नहीं है अभी तक। वैसा मजाक करना तो फिर मैं जीन ले लेता हूँ ना, वैसे भी वो कुछ कर नहीं पाती थी। नहीं एक्चुअली कर देती थी 63 पे भी वो काफी है, मतलब मरती नहीं है बट लड़ लेती है थोड़ा बहुत। एज़्दाहा के सामने शील्ड कैरेक्टर वही प्रॉब्लम है। ये 2 एनिमी अभी जो आए वो दोनों को शील्ड चाहिए।
ले। अरे हाँ, ये गान्यू चाइल्ड का टीम अच्छा है वैसे। Brace yourself. This is Brace yourself. Life goes on. It is about to absorb the power of Rio. There is no atonement for 1,000-year pain! अब मैंने ना जापानीज ऑडियो फोन के अंदर डाला और चीची के साथ मैं भटक रहा था और उसके मस्त डायलॉग्स है जापानीज में। हाँ नाना चैन You witness your reckoning! tidal wave. नाना चैन गानी भी मस्त बोलती है काइजू कूद है पहले अटैक करता था Amateur ओ mistake. भाई 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 भाई। Right. यार, इसका अपना आयोना का शील्ड जितना टाइम देता है ना उतनी टाइम इसका भी रहेगा Enraged Earth will not absolve! टोमा का 8 सेकंड का ही शील्ड है ओ, ये तो कम है, जोंगली जैसा नहीं है। हमने का 21 सेकंड का शील्ड और कूलडाउन से 10 सेकंड Stand upon your doom! ओए Not! जैसे ही खत्म हुआ वापस डाल दो खत्म ही जोंगली नहीं को। होता तू अरे गलती से ये हो सकता है ना वही refresh होता है। गलती से खत्म भी हो गया तो बस चल वापस लेकर आने का और वो कर देगा। Life goes on. हाँ Orders given. डायोना की शील्ड रहती है मान गया मैं डायोना Shouldn't let सही your होने के बाद उसकी शील्ड काफी चली नहीं नहीं डायोना मर गई no time to lose. ये मैं स्लाइड हो गया, इतना दूर कैसे चला गया? अरे उसने स्टॉर्म किया होगा इसे Go. Cowardly insects! मेरे दोनों है ना मार्क छोड़ने वाले कैरेक्टर है। चीची का भी टेलिस्मैन है और इसका चाइल्ड का रिपटाइड है। मैंने उठाव नहीं लिया ना वो भी छोड़ No time to lose. निशानी छोड़ने की बड़ी आदत है और ये भी निशानी छोड़ता है अपनी फायरों की। वो भाई। अटैक मोड पे कुछ काम की नहीं है डायोना The enraged Earth will not absolve you! खत्म, इजी था, मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगा। Will हाँ not हाँ be destroyed! चाइल्ड गानियों का टीम अच्छा है। गानी तो भी बहुत अच्छा डैमेज कर रही थी इसको फिजिकल रेजिस्टेंस इसको रेजिस्टेंस बहुत है तो फिर भी कितना 12,000 का डैमेज कर रही थी और एरो हाँ ठीक है इसके ऐसा नहीं है दिवाली का तो भाई 40,000 का डैमेज दिवाली का तो भाई दिवाली मर जाएगा ऐसे ही रहने दे मैं मेरे बहनी को थोड़ा सा वापस बिल्ड कर रहा हूँ। उसका मैंने ना जो गॉबलेट है क्रिट रेट का Time to go. वो मैं ये कर रहा हूँ। मेरे को एक थोड़ा अच्छा सब स्टैट्स वाला मिला Time to उसमें go. अभी वो डाल रहा हूँ। मैंने अभी दानियों को होटा को क्राउन किया और उसका दूसरा भी टैलेंट में क्राउन करने वाला था फिर मैंने सोचा कि काजुआ का स्किल बढ़ा नहीं बर्स्ट बढ़ाया क्या किया मैंने कुछ उसका तो बर्स्ट को 9 किया अभी नेक्स्ट उसका स्किल को 9 करूंगा चलो अभी क्या करना है। तेरे वर्ल्ड में रेमे फिश है? नहीं आज ही मैंने कही अरे रेमे के अलावा मेरे को ये रेमे फिश इसके लिए भी चाहिए ना कैच के लिए। नहीं कैच का रिफाइनमेंट करने हाँ Time to go. समझ गए।
बहुत मारा मारी उसकी, और वो है भी ऐसी बकवास जगह पे ना कि बकवास जगह तो छोड़, वो सिर्फ 3 दिन पे 5 स्पॉन होती है। कभी मैं एक बार लकी हो गया 5 हो गई, फिर कल आज सिर्फ 3 ही हुई। अरे मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहली बार पकड़ने के लिए गया ना, तो वहाँ के एनिमीज को मार रहा था ना, गलती से पानी में गिर गया तो डर के भाग गई। नहीं, वो सिर्फ नाइट टाइम पे आती है। हाँ वो नाइट टाइम पे भले ही आती है, बट लेकिन मैं पानी में गिर गया ना तो डर के भाग गई। फिर उसके अगले दिन 4 स्पॉन हुई, फिर उसके बाद से मिली ही नहीं मेरे को। हाँ, क्योंकि वो 3 दिन पे स्पॉन होती है। ये जो इवेंट है इसमें है रे में किधर भी? नहीं, अभी तक तो 2 दिन पे तो नहीं आई, 2 ही दिन हुए ना। ठीक है, चल मेरे पास थोड़ा सा रेजिन है, कुछ करना है लड़ना है तो कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल अभी कैश जमा कर। मैं तो इस वक्त जीन बिल्ड कर रहा हूँ तो उससे लड़ रहा हूँ, एनिमो वाला हाइपोस्टेसिस। काजुआ को आमिनो में बहुत अच्छा है, आराम से 10,000 का डैमेज करता है और बेंच पे 25-30 हज़ार। Why do they never miss? मैं सोच रहा हूँ शायद से काजुआ को मैं डीपीएस की तरह बिल्ड करूँ सपोर्ट के बदले, क्योंकि मेरा तेरा तो C2 भी है ना। हाँ। मेरा तो C2 भी नहीं है, तो मुझे तो डीपीएस पे फोर्स टू में, सॉरी सब डीपीएस पे। क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, मेरे को लास्ट वाला एलिमेंटल मास्टरी मिल ही नहीं रहा है यार। वो मतलब मेरे पास वो ब्रो, वो कितने लोग 8 महीने से लोग वो वीवी का कर रहे हैं ना, तो भी अभी तक सारे सेट नहीं मिले लोगों को। मेरा सिर्फ वो एक वाला एलिमेंटल मास्टरी का रह गया, बाकी सब मतलब 5 स्टार है, सिर्फ ये एक ही है 4 ब्रो, स्टार। मैं कब से क्रिम्सन ग्लिच कर रहा हूँ, मेरे को पायरो गॉबलेट मिली थी, बाकी सारे एलिमेंट के गॉबलेट मिल गए, सिर्फ पायरो का नहीं मिला। Time to go. मतलब मैचिंग। हाँ, क्रिम्सन ग्लिच वाला। मेरे को तो अभी तक मैचिंग वाला रेयरली कोई मिला है रे। One with me. नहीं, मुझे फिजिकल डैमेज का मिला है। वो मेरे को में मिला है। और वो दूसरा वाला कौन सा है फिजिकल डैमेज बोनस वाला? ब्लड स्टेन शिवलरी। हाँ, उस पे भी मेरे को फिजिकल डैमेज बोनस मिला। ओके, वो मैंने इसको दिया है, कौन है अपनी रोजारिया को। रोजारिया फिलहाल शंगलिंग और रोजारिया दोनों C6 पे बैठे हैं और दोनों बिल्ट नहीं है। तो किधर भटक रहा है? ऐसा ऐसे ही भटक रहा हूँ। वो कौन सा डोमेन करना है तुझे? मेरे को कोई भी चलेगा। मैं तुझे वो कॉई चाहिए थी ना, कॉई इधर आ जा। मेरे को नहीं भी मिली ना कोई चलेगा रे, मैं आराम से कर लेगा। अरे बहुत है, मैंने बचा के रखी, भी कोई पकड़ी नहीं है मैंने। तो फिर मैं ये इनाजुमा का एकदम लास्ट वाला आइलैंड है ना, सेरे आइलैंड, उधर जा रहा हूँ। क्यों? उधर रहती है ना कोई, सबसे पहले तो वहाँ पे आती है। इधर भी है, सबसे ज्यादा इधर है। सबसे ज्यादा तो मॉन्स्टैड में मिलती है। अरे ये रही। अरे इधर मेरे सामने 4 है, मेरे सामने 4 है। हाँ वो भी है, इधर भी 4 है। लियो है मेरे लोकेशन। एक डर के भाग गई, बाकी सारी दूर है। मेरे को एक्चुअली है ना सिल्वर कॉय चाहिए, ये सारी गोल्डन कॉय है। उधर गोल्डन कॉय है, मैं जहाँ खड़ा था ना लियो पवेलियन। गोल्डन मेरे पास है ना, गोल्डन मेरे पास 16 है, तो ये 4 पकड़ लूंगा तो 20 हो जाएगी मेरी। हाँ तो हो गया ना। ये फोन पे ज्यादा इजी है। फोन पे इजी है, भूल तो रहा था मैं तो। Steady now, it's the final stretch. What is it? What is it?
What Is is it another what Paimon? is it another Paimon? चल एक आई सिल्वर है ना ए ले डर गई तू उनके मुंह के थोड़ा दूर भी, तू एकदम उनके मुंह पे मत फेंक। मैं ट्राई करता हूँ मैं बॉडी के पास भी कभी कभी फेंक देता हूँ Yeah, you nearly got him. What is it? What is it? Is it another Paimon? इतना फालतू डायलॉग लगता है ना अभी है इज इट अनदर पाइमॉन Longwood Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. एक बार बोले चलता है बार बार बोलती है ना सर चढ़ता है उसका को आवाज भी एकदम थोड़ा ये है ना हाई पिच है हाँ So close, so close. Stay cool. तू कर, मैं तब तक किताब पढ़ रहा हूँ। अरे ये चिंचू एल्बर्डो की किताबें इधर मिलती है इनाजुमा में मालूम है शिंचो को अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज मिला। अबे अभी इतना तो दूर था ये अभी क्यों डर के भाग गई अच्छा ये भी भाग गई। नहीं भागी नहीं वो डायरेक्शन चेंज कर ही रही थी ये अरे इसने जस्ट अट्रैक्ट किया था और ये मैंने भगा दिया भाग गया। Goodness. हाँ ठीक है दूसरे ने तो पकड़ ली ना जब तक ये सेट पकड़ लूंगा तब तक वो सेटल डाउन हो Revealed in जाएगी the next volume. या पब्लिशिंग हाउस का एक वर्ल्ड क्वेस्ट है, हाँ इसमें तुझे बोलते हैं कि एक ऑथर को ढूंढना है, हाँ लियोए जाके ढूंढ सकता है क्या तू? हाँ वो हम जाते हैं। पत्थरों में रहता है वो नहीं एक शैंग द नाइन्थ वो तो है, वो तो चिंगचा विलेज पे होता है ऊपर, वो हाँ हाँ वो चिंगसा विलेज पे होता है वो हाँ, नहीं। तो दूसरे को बोलते हैं वो वहाँ का जो बुक स्टॉल है ना हाँ लियोए I'll पे, never embark on a journey. वहाँ जाके पूछो ये बंदा कौन है, Accompany me. क्योंकि उसका पूरा आइडेंटिटी मालूम नहीं है, अच्छा तो क्योंकि उसको अवार्ड देना है, वो फर्स्ट प्राइज आया है और चैंग द नाइन सेकंड आया है ऐसा कुछ था। अच्छा तो चिंचू निकलता है तो हाँ वो शिंगचे निकलता है। और तो ये मेरी बुक है, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरी बुक लेके? फिर उठाओ का डायलॉग भी है, I hear Master Shincho is writing a new book. है ना I hope he can write in the horror section. ऐसा बोलती है वो। I can advise him on Now, this is what I call a moment of solitude. आ गई। एक तो मुझे वो ट्रेजर सीली भी इरिटेट करता है, वो आवाज करते रहता है ना, मेरे को नहीं मेरे को वो अच्छा सॉलिड इरिटेट करता है। ठीक है रे मुझे चल इसलिए रे मैंने एंडोरा रखा। चल ठीक है अभी इतना काफी है मैं वैसे भी स्ट्रीम पे हूँ पब्लिक भी बोर हो रहा रहेगा मेरे को फिशिंग करते हुए देखते हुए बाद में कभी भी देखेगा पब्लिक तो छोड़ फिशिंग तो मैं वैसे भी मेरे वर्ल्ड में कर ही सकता हूँ मेरे को कैच का इतना कोई घाई नहीं है वैसे भी शाओ को यूज नहीं कर सकता हाँ कैच शॉप पे नहीं चलता। तो मेरे को कोई घाई नहीं है उसका हाँ तेरे पास तो कोई कैरेक्टर भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ शांगलिंग है तो है। मेरे पास सिर्फ शांगलिंग है और उसके पास प्रोटोटाइप स्टार ग्लिटर है लेवल 80 का हाँ मैं अभी क्योंकि वो बिल्ड भी कर रहा हूँ था कैच, हम्म कि मेरा बस सपोर्ट जोंगली है ना, तो मुझे तो वो बहुत काफी इम्प्रूवमेंट होता है उसके अटैक्स में। Time to go. ठीक है चल लड़ते हैं किसी के साथ मेरे पास 60 ये है रेजिन वो कॉन्सर्ट हो गई करता है। मेरे को क्रिम्जन भी चलेगा या वीवी चलेगा दोनों में से कोई भी चलेगा वीवी इट इज दैट। वीवी क्योंकि मेरे 3 लोगों को चल जाएगा वीवी काजुआ का तो बिल्ड
वही तेरी एक यूनिट पूरी एनिमो। मैं तो सीधा एनिमो का कौन सा रहेगा रीजन, अपना मॉन्स्टर ही है ना, वो तो खत्म हो गया, एनिमो का रीजन है। वो एक खत्म हो गया वो तो, वरना उधर जाता। हाँ भाई वेंती अपने एनिमार कौन आ गए तेरा डिसाइपल। रेड मारेंगे हम। मेरे को सायू चाहिए रे एनिमो की गैंग के लिए। चल वीवी के लिए मैं जीन लेता हूँ, तू काजुआ ले ले। ओके। और या एक बार जीन या फिर बाद में जाओ, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है आई एम रेडी। जीन बेनी। बट भाई जीन वैसे अच्छा लड़ती है हाँ? और जीन का एक और फायदा है वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में, स्पीड फास्ट हो जाता है भागने का। हाँ वो फील होता है लिटरली 15%। मैं बोलूँ अचानक से। अटैक स्पीड भी उसका उसका ये भी बढ़ता है ना, अटैक स्पीड भी बढ़ता है। हाँ नहीं वो कॉन्स्टेलेशन के पीछे है अटैक स्पीड, अच्छा बट रनिंग का तो भाई मैं ऐसा लगता है ये है ना, ग्लाइडिंग से ज़्यादा जल्दी इधर पहुंचता हूँ इससे, Swear by my sword! भाग के पहुंच जाता हूँ अभी तो। Everybody stand back! हे तेरी सबसे बेस्ट वर्स्ट कॉम्बिनेशन। मर गई मेरी जीन, मर गई है? मैं बेनी के उसके अंदर था, रिंग के अंदर था पता है। Let's light it up! Going in! ये ले, इसको एक फटका लगा, जीन को वापस मर गई। वैसे तेरी हुटाओ के लिए वर्स्ट कॉम्बिनेशन है जीन। मैं नॉर्मल अटैक भी मारूंगा, हील कर देगी वो। Let's light it up! तो ठीक है, मेरा बोनस में से थोड़ा सा ही फर्क It's है। dream work! हाँ एक्चुअली वो बहुत धीरे धीरे हील करती है जीन। Clouds high. The birds call. One with nature. Let's light it up! Let's light it up. Adventure time! The wrong test subject. मेरे पास शायद से कंडेंस रेजिन भी रहेगा रे। हाँ मेरे पास एक कंडेंस रेजिन भी है। चल रीस्टार्ट करो। बाहर आ जा, पहले मैं बाहर निकल के। Okay. तूने सिग्नोरा को तो अनलॉक नहीं किया ना अभी तक? नहीं, बोल के रहा हूँ थर्ड चैप्टर पे अनलॉक हो, थर्ड चैप्टर तो कंप्लीट। हाँ एकदम एंड में आती है। लास्ट एनियर वाला कैरेक्टर कौन है? ये सारा बस और कौन है? मेरे को पहले रिवाइव करना पड़ेगा जीन को। छोड़, मैं शाव ले रहा हूँ अभी। Oh, ow! Where did that come from? जाओ तो अभी एकदम मस्त बिल्ड हो गया। अभी इसको 84 तक तो लेवल भी ला दिया है। पहले जीन को बिल्ड करूंगा, फिर बाद में शाओ को 90 पे लेके जाऊंगा। हाँ मतलब उतना रिसोर्सेज पुल करके फायदा नहीं है। शाओ पे वर्थ है क्योंकि उसका फिर अटैक उतना स्केल ऑफ भी होता है उसके अटैक से। पर एनिमो का, सारे एनिमो का वही प्रॉब्लम लेवल पे होता है एनिमो स्केल ऑफ। तो इवन काजुआ को भी 90 पे ले आना पड़ेगा, सायू भी तो सायू पे भी 90 क्योंकि सोल लेवल पे होता है। काजुआ तो मेरा हो गया Everybody stand! सबको। अरे तू काजुआ नहीं लिया ना, मेरे को लगा तू खींच के लेकर आएगा सबको इधर। Worthless. Worthless. एक मार भी दिया इसने शाओ ने। खत्म। The wrong test subject. The wrong test subject. इधर है। Useless. Boring. इधर है ये। It's dream work! Just... ड्रीम वर्क है किधर? This is order. अभी डायरेक्टली अंदर से रीस्टार्ट कर दियो। Can't run from death. अगर
अगर मैं क्लेम करता तो ही मैं कर सकता हूँ। अच्छा तो नहीं करने क्या तेरे को? ये मैं नहीं क्लेम करता, बोल तो रहा हूँ मुझे कैश चाहिए। चल ठीक है, वीवी के बाद चल फिर कैश वाला करते हैं, मेरे को भी चाहिए एक्चुअली कैश। कैश करना ठीक है। चल कैश वाला करने चलते हैं। किधर जाना है? डिवालेंस डोमेन। ठीक है, मेरे को भी कैश का जरूरत पड़ता ही रहता है रे, क्योंकि जीन को कॉन्स्टेंटली बिल्ड कर रहा हूँ ना इस वक्त। मुझे कैसा है काजुआ का Time to go. लाइन पे लेके आना है, होटाओ को Time to go. ग्राउंड करना है वापस। I follow the wind. कोई नहीं, बट भाई फोन पे ग्राफिक्स कुछ अलग ही लेवल है, पीसी पे पीसी हैंडल ही नहीं कर पा रहा। फुल ग्राफिक्स पे गेम क्या मजा आता है ना देखने में। दिन का इतना फर्क नहीं पड़ता, बट नाइट की लाइट्स का बहुत फर्क पड़ता है, अलग ही लेवल। Everybody stand back! As one with wind and कर लो कर लो। change to the wind. One with nature. कर दो दिस। मैंने आयरन स्टिंग इसको दे कर कचिंग को। क्यों? फिर काजुआ आमिनोमा लेके बैठा है के लिए। चल आमिनोमा कचिंग के लिए है, Time to go. तो काजुआ पे ज्यादा सूट होती है, तो उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है। डिजाइन वाइज उसकी है और ना? हाँ, और स्वर्ल भी देखना। हाँ मतलब स्वर्ल देख 644 है टीएम मेरे पास अभी, वो 804 होता है अगर मैं आयरन स्टिंग डालूं तो इतना ज्यादा ईएम भी कुछ काम का नहीं है ना, एक टाइम के बाद तो कुछ बेनिफिट भी नहीं है। वो भी है। चल इधर वाले पे आ रहा है। उनको छोड़, वो क्या है वो स्मॉल फ्राई इधर। इधर अच्छा क्या है, दूर रहना, क्या लड़ना है तो ढंग से लड़ना था, भाग। Time to go. टाइम पास करने आती है पब्लिक। ये उड़ जाएगा। हाँ, इसके लिए जितना जल्दी मार सकते हो पहले मार लो। Into the wind. Witness the power of boom! One with wind and मर जाएगा मेरे हिसाब से। दो काजुआ और बैंड। ये बहुत जल्दी उड़ जाता है। अरे वो गायब हो जाएगा, जल्दी ले। अबे गायब होएगा, जल्दी ले। मेरा हो गया खत्म, रेजिन खत्म, मेरा भी अब भी खत्म हुआ। इसी था, मैं सुबह से कर रहा हूँ कैश। और ये भी किया मैंने, क्या बोलते हो, वेपन भी मैंने ये किया ना। Off we go! the wind moves. Fallen leaves. Adorn my the birds Let me call. leave you a bird. One with nature. तेरा 4000 करता है। हाँ, तेरा 4000 करता है, मेरा 6000 करता है अटैक। अपने काजुआ में फर्क है। The wind moves. तुझे एडिशनल अटैक बोनस मिलता है ना। इधर ऊपर छुपा हुआ है ये। Everybody ऐसा ना होता है ऐसा। भाई अभी इतना बुरा आदत लग गया ना काजुआ का कि वर्ल्ड ट्रैवर्सल होता नहीं है। और मेरे उसी तरीके से चीची का मेरे को बुरा आदत लगा हुआ था।
पानी ये मेरी स्वॉर्ड ग्लो क्यों हो रही है? दिखा हम्म? दिखा दिखा दिखा। नहीं मेरे इधर तो नहीं हो रही। मेरे उधर ग्लो हो रही है। ग्लिच मेरे में ऐसा ग्लो नहीं होती है ब्लू कलर में, एनिमो के कलर में। Wind knows me. ग्लिच रहेगा रे। ये उसका बर्स्ट में ग्लो होती है ना, तो वो एनिमेशन अटक गया रहेगा। वो बर्स्ट एनिमेशन, हाँ अरे ऐसा बेडो के साथ भी होता है, वो बर्स्ट एनिमेशन में कभी कभी अटक जाता है। Wind strider. पहली बार हुआ है ये। अच्छा लग रहा है काजू में। हाँ इनको देना चाहिए रे कि एलिमेंटल इन्फ्यूजन स्वॉर्ड पे। हाँ तू C6 पे नहीं करते हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। पायरो इन्फ्यूजन। हाँ बेनी है ना, बेस्ट सपोर्ट से वर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। बेनी पूरी वैल्यू छोड़ देता है C6 पे। फुल मेरे को तो C5 कहता है C5 Time to go. बेनी डिजायर्ड, C6 बेनी नॉट डिजायर्ड। सबसे गंदा कॉन्स्टेलेशन बेनी का ही है C6। हाँ मतलब डेरोगेटरी है एक्चुअली, डिटोरिएट करता है वो character। मेरा C4 है, मेरे को बस C5 चाहिए अभी। ये चल हैक्यूनिकी खत्म होने वाला है। लूनर रेल्म तो हो गया। BP 20 पे पहुंच गया मैं। एक और विश मिला। नॉर्मल विशेस 5 पे आ गया है। तो जो याकुयानिकी का लास्ट स्टेज बहुत मजा आया आपको। स्टेज मेरे को बहुत इजी लगा। इजी तो था ही, पर कैसा रिएक्शन था ना। मैंने सारे पैरिंग वाले करके The रखे थे। scenery बेनी is काजुआ, wonderful. Surely शिंचो enough to होटाओ, convince anyone to become a wanderer. चाइल्ड फिशन, हम्म जोंगली शाओ, और क्या नहीं, जोंगली शाओ नहीं, सॉरी डायोना शाओ, जोंगली और अपनी गानियो, और फिशल, सॉरी फिशल नहीं, कौन है वो, कचिंग, और किसको रखा था मैंने लास्ट, कचिंग और शांगलिंग को रखा। तो रिएक्शन पे रिएक्शन, सारे रिएक्शन वाले एक दूसरे के साथ, मजा आ गया। अरे डिफेंस Time to go. भाई आर्टिफैक्ट का आरएनजी बहुत बकवास है। एक तो सबसे पहले तेरे को 5 स्टार प्रॉपर मेन स्टैट के साथ चाहिए, फिर प्रॉपर सब स्टैट्स के साथ चाहिए, फिर उसके ऊपर तू देखने के लिए जाएगा तो आर्टिफैक्ट का भी है ना, स्टार्टिंग से जिसका 3 स्टैट्स है या 4 स्टैट्स है। जो 4 स्टैट्स वाला है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो एक बार और अपग्रेड मिलता है ना सब स्टैट्स का। तो उस वजह से कभी भी कोई भी परफेक्ट टीम बना ही नहीं पाएगा, लाइक परफेक्ट कैरेक्टर। इतना आरएनजी तो नहीं सकता ना तू, नॉर्मल तो बोल रहे हैं कि वेल भी मैक्सिमम जितना रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग को रेजिन रिफ्रेश का रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। बट वो भी उनको भी कितना पैसा डालना पड़ेगा, तो वो जाके गारंटी कोई नहीं है। हाँ वो तो है। यूजुअली दूसरी इसलिए गेम्स तो के ये अंदर वही, यूजुअली दूसरी ब्रो, गेम्स ये के टाइम अंदर ब्रो, ये टाइम लोग भड़के क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि वो लोग ने चिंदीगिरी किया पहली बार क्या? बाल बैनर पे पर्पसली नर्फ किया, जो आज तक कभी उन्होंने किया नहीं किसी भी कैरेक्टर को नर्फ।
पहली बार पैसे कमाने के लिए नर्फ किया वो लोग। वो भी है। और अब भी वो लोग ये भी कर रहे हैं ना, लीक्स को ये कर रहे हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा Super लीगल, है, बहुत ही legals बहुत ज़्यादा लीगल एक्शन ले रहे हैं। एक बंदा तो बोल रहा है कि इतना फाइनेंशियल डेप्थ के अंदर हो गया हूँ मैं कि उसको बैंक्रप्सी फाइल करना पड़ रहा है, जेल तक जाने का पड़ रहा है। हाँ मतलब वही सब तो वही बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग वो सादा जो सस्ती गेम्स होती है ना, फालतू में गेम्स बनाए फ्री में इसलिए रखते कि लोग पैसे खर्चे बिना सोचे, ऐसी बना दोगे। और भाई इसलिए बढ़ गया। और अभी अगर ये स्टोरी अगर और लंबा खींचेंगे 3-4 साल तो वही होने वाला है यार। नहीं मतलब लोगों को गुस्सा क्या मालूम है कि तुमने नर्व क्यों किया जब जरूरत नहीं थी नर्व करने की बाल और बेड़ों को। और भाई अभी इसमें एक नया स्टोरी भी है, ठीक है? क्या? बेडो का कैसा है, ऑन नॉर्मल अटैक हिट उसका इलेक्ट्रिसिटी होता है, ट्रिगर होता है, राइट? चिंचू का बर्स्ट का कैसा है, ऑन नॉर्मल अटैक हिट ऑन एक्शन ऑन नॉर्मल अटैक एक्शन उसका जो भी है तलवार जाता है, ठीक है? तो इस हिसाब से चिंचू भी नहीं करना चाहिए ना अगर बेडो भी नहीं हो रहा तो। बट चिंचू का बर्स्ट तो बाल के साथ एक्टिवेट होता है, काहे, क्यों? अरे वही तो है, चिंचू का विद एक्शन होता है वो। बट है तो नॉर्मल अटैक ही ना भाई। बाल का देख, नहीं बाल का बेडो का देख, बेडो का जब भी तू स्किल जब बर्स्ट डालता है और अगर आजू बाजू कोई एनिमीज नहीं है तो प्रॉक होता है इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई वो तू छोड़ ना, बट है तो नॉर्मल अटैक दोनों के लिए ना। नहीं पर इसका अभी शिंचो का स्वॉर्ड्स तो जाता है, इवन if एनिमी आजू बाजू नहीं होगा वो फिर भी जाता है। अरे ठीक है जाए पर जाए, बट है तो नॉर्मल अटैक पे जाता है ना। योर एक्टिव कैरेक्टर्स नॉर्मल अटैक विल ट्रिगर, ठीक है? बेडो का क्या है, व्हेन नॉर्मल अटैक हिट, नॉर्मल अटैक तो बाल के साथ इसका होना ही नहीं चाहिए ना फिर। सेंटेंस का 3 पहला नहीं अबे नॉर्मल बंदा वो उतना पड़ेगा, नॉर्मल अटैक वो उतना ही देखेगा। अभी इतना टेक्निकलिटी के अंदर मिहोयो को जाने का जरूरत क्या, ये चिंदीगिरी है। क्लियरली बोला है ना, नॉर्मल अटैक हिट एंड नॉर्मल अटैक। हाँ तो हिट लिखा नहीं है ना। अरे बट हिट क्या तेल लेने, ये लोग जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि बाल का बर्स्ट मोड के अंदर है ना जो अटैक्स करती है वो नॉर्मल अटैक्स नहीं है, ठीक है? हाँ बर्स्ट डैमेज अटैक्स है, वो बर्स्ट डैमेज अटैक्स है। उसी हिसाब से तो फिर चिंचू का नॉर्मल अटैक के ऊपर ही प्रॉक होना चाहिए ना, वो नॉर्मल अटैक का एक्शन पे प्रॉक होना चाहिए ना, क्योंकि बाल का तो बर्स्ट है। तो चिंदीगिरी हुआ कि नहीं है? मतलब एक कैरेक्टर के साथ अलग बिहेवियर, अलग कैरेक्टर के साथ अलग बिहेवियर, इतना क्या टेक्निकल होने का जरूरत है इन लोग को? नॉर्मलाइजेशन जो भी हो, क्योंकि डैमेज आउटपुट ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। करना पड़ता है ना। हाँ क्योंकि बेडो के साथ अगर बाल को कर दिया तो भाई खत्म, सबसे पावरफुल जोड़ी बन जाएगा गेम का। तो बाकी लोग कैरेक्टर्स फिर नए कैरेक्टर के लिए नहीं होएगा, तो ये लिटरली नहीं, फिर उनको ये करना पड़ेगा, पावर क्रीप करना पड़ेगा। बाकी पुराने कैरेक्टर्स को पावर क्रीप करके नया वाले को और बढ़ाओ। तो गलत है यार ये। वो भी तो गलत है, पावर क्रीपिंग भी गलत है ना। अबे मैं बेडो मेन हूँ, मेरे को तो कितना मस्त रहता अगर वो ढंग से चल रहा रहता तो फिर भी मैं चल बाल के लिए सोच लेता पैसा देके करने को। अमीर हो तुम। अमीर नहीं है, अमीर तुम हो दिल से। चल छोड़, इसको मारते चल, अभी बहुत टाइम से इसको मारा नहीं है। इसको रून गाड़ी दर वाला जमाना बीत गया इसको मिलने में।
हाँ एंट्रेंस पे रोइंग गार्ड है। हाँ जमाना हो गया इसके मुझे साथ मजा लड़ाई। आता है Wind striker. वो रोइंग गार्ड को पहनने को मजा आता है, इसलिए मैं तो ऐसे ही मारते रहता हूँ। Going in! तू भी 24,000 का ही सोचता है? क्योंकि मेरा एक एलिमेंटल मास्टरी वाला नहीं है ना, 4 स्टार है। मेरा भी 4 स्टार एक Time to एलिमेंट go. मास्टर ही है। मेरा 3 स्टार है एलिमेंटल मास्टर। हैं? सॉरी एक 4 स्टार है एलिमेंटल मास्टर, बाकी 5 स्टार है। इधर भी फिशेस की 2 जगह है ना। One with nature. Adventure time! Clouds high. The birds come. Order guide you. Stabilize. Time to go. क्या करना है अभी? तू बता। बस कुछ कर भी नहीं सकते ना, ज़्यादा रेजिन ख़त्म हो जाए तो। फिशिंग तो करने वाला हूँ नहीं मैं भाई अभी। मैं वही करता हूँ, मैं डायरेक्ट फिशिंग करता रहता हूँ, टाइम पास हो जाता है मेरा। मैं तो फिर अभी स्टोरी क्वेस्ट ही थोड़ा खेलेगा, कंप्लीट करेगा स्ट्रीम पे। चल मैं भी काम करने बैठता हूँ, तू ठीक कर है। कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है चल चल बाय। बाय बाय। एक सेकेंड। चलो अभी हम स्टोरी क्वेस्ट करेंगे थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर ये एक क्वेस्ट है मिदोरी का। Well, I'm running out of new stories to tell Koichi. What kind of new story? It's a new story told by Uncle Ramsey. He said he's been to many countries and seen many interesting things. In order to record these things, he wrote something called the travel log. He showed me a lot of his travel logs. For example, there is a kind of iron carriage that flies in the sky in Fontaine. It runs along an invisible road. It takes no time to travel from one end of the village to other. There's a special kind of grass in Sumeru which can be planted anywhere. It can be planted in soil or water or sand. Once it's planted, it will sprout and grow. And there's a kind of boat that can stay at the bottom of the sea for a long time. By riding in that boat, people can go to the deep ocean to do all kinds of things and see all kinds of fish. Did he tell you about Sneznaya? Sneznaya? Well, I don't think so. Well, that's not the point. Recently, Uncle Ramsey stopped sending me his travel log for some reason, so I'm running out of stories to tell Koichi. I know that Uncle Ramsey has been staying at the Komore tea house. I wanted to go find him, but the gatekeeper, Sister Kozue, wouldn't let me in because I'm a kid. You look old enough. Can you help me ask Uncle Ramsey what happened to those travel logs? I'm not that old. Anyway, you look like a reliable person. Please help me. I'll see. So, let's see. Oh, are you also interested in reading those travel logs? No problem. Just give them to me when you're finished. I'll go with you, although I can't get in. I can wait for you near the tea house. I'm also looking forward to reading Uncle Ramsey's new travel. चलो ये बंदी को थोड़ा हेल्प कर देते हैं हम लोग. Welcome to the commodity house. How can I help you?
About Ramsey. Oh, that businessman? He's indeed in the tea house, but he's been quite stressed recently. Not sure what happened. If you want to find him, just go inside and you'll see him. ये दरवाजा Taro Maru. Woof. Woof woof. Woof. Can you understand me, doggy? Woof. Sure. Ramsey, are you a traveler? What can I do for you? About the travel log. Oh, you mean the travelogue I wrote for that little girl Midori? I've been too busy to write those lately. She must have been getting anxious. Are those travelogues reals? Haha, what do you think? I hope it's true. Haha, I also wish that the things I wrote could come true. That's right. Technically, none of the facts in the travelogues are real. Although some places and characters are based on reality, most of the contents are my own imagination. Of course, some of it is not entirely imaginary. For example, in the travelogue that I am writing, someone made a super balloon. Then he summoned his friends and planned to travel around Tewat in this balloon in 80 days. Also, this balloon does not require a vision to operate. All it takes is some technical knowledge. These people travel around the world in a balloon and they encounter very strange things and phenomena along the way. I was going to write this for Midori, but for some reason, I didn't even have time to finish a short paragraph. Why is that? Do you see that guy in the hallway? He's called Heihachi. He's been staring at me since I don't know when. I was going to look for inspiration for my travelogue, but that guy has been following me everywhere. I don't know what he's trying to do. I'm worried that this guy has ill intentions toward me. I wouldn't dare to go out. That's why the travelogue has been delayed. Fortunately, now you're here, traveler. Can you accompany me to look for inspiration outside? With you there, I don't think he would dare to do anything to me. Why would he do that? I don't know, but people don't need reason to be malicious to someone. As the saying goes, one must guard against the others. Someone staring at me from behind, I have to guard against him no matter what. So, when I'm looking for inspiration, please protect me, traveler. In fact, I already have a few locations in mind. Let's go there now. The first place is near the beach. Let's go. Chalo. What are you looking at? Get out of my way. He is suspicious. Time to go. Follow the wind. Follow the wind. The water at this beach is crystal clear. The color of the sand is so white. It's completely different from the open sea. It would be a place to set sail from or take off from. The scenery here is very nice. Let me write it down in my notes. Traveler, please wait a moment. I need to think about how to write my travelogue. So you can walk around and enjoy the scenery. But please don't stray too far away from me. That guy Heihachi is following me. He's just nearby. The wind knows me. Time to go.
Why are you standing in my way? Are you trying to start something? Why are you following us? Following you? What? I'm just taking a walk around here. What's wrong with that? Do you own this beach? Who do you think you are? He is suspicious. Pretty good. The scenery here is really nice. And then let me have a look. There is a river bend in the outskirts to the north of town. The small waterfall there is very nice. Let's go there. Into the wind. Why are there monsters around here? Everybody stand back! Why are there monsters wandering around? Although the scenery is very nice, it really is quite dangerous. But I can include this experience in my travel log. Let's get out of here and find a safe place. That guy is still following us. He really is, persistent. किधर है? The wind knows me. अंदर की तरफ ही होगा. इधर नीचे. कोई नहीं. The last location is the top of the hill over there. The view is very good. We should be able to get some inspiration. I think यहाँ से ग्लाइड करके जाना बेटर है.
Standing on top of the mountain, you can almost see the entire Narukami Island. The wind at the mountain top is quite strong, and the height is perfect for takeoff. There are no obstacles here, and it's a long way from Inazuma City. I won't be disturbed by Doshin or by unwanted people. It really is a good location. In conclusion, it's a good location to take off from, and it's a nice place to write about in the travel log. That guy, he's still following us? He just won't let us go. I'll get rid of him. It's fine, don't worry about him. He wouldn't dare to do anything rash with you around. When dealing with this kind of person, if you approach him, he would keep pestering you. Anyway, let's call it a day. Let's go back to the commodity house. चलो घर साफ कर रही थी वो बंदी। I already have some ideas about the main story of my travelogue, but it'll take me a day or two to finish the chapter. I wrote a few paragraphs before. Please take this paragraph to Midori first. When I'm finished with the whole story, I'll ask someone to bring her the completed travelogue. Travelogue? That's what he says. How would I know if he has any other agendas? What are you talking about? I said this guy has ulterior motives for writing these travelogues. Who would think about such random nonsense? Traveling around Tibet in an hot air balloon without using a vision. There must be some sort of a hidden agenda behind it. He just hasn't exposed himself yet. Please take this paragraph. नोबु मोरी अंदर क्या कर रहा है? It's another peaceful, careful raid. Carefree raid. May I ask who you are? Hello, welcome to the commodity house. I'm a doorman for the Kamsato clan and I work here. That being said, I really have nothing better to do than drinking tea here. It's far more relaxed compared to the days when I had a vision. It's not bad at all. Your vision? Don't misunderstand. Even though I have lost my vision, I am not actually a victim of the vision hunted decree. I lost mine in a competition, fair and square. Back when I was a polearm instructor, I challenged Kamisato Ayato to a duel with the polearms. Having learned the secret techniques of the Kiten school, I thought I was invincible. But as you might expect, how could I defeat Kamisato Ayato with my limited skill? After losing, I handed my vision over. Strangely, losing the vision felt like letting go of a heavy burden. Those obsessions I had before all disappeared. From that day forth, I no longer stepped into the Kamisato clan estate and became a doorman instead. Kamisato Ayato not only has excellent swordsmanship, but has great skill with the polearm. It's really an honor that I can still serve him as an ordinary doorman. But it's not as if a peaceful life is easy to come by. As for me, I no longer need to slave away for some glittering little paw. You've crossed blades with Kamisato Ayato? That was my youthful ignorance. Please forget about it. In my current job, I probably won't be needing a sword or spear. My skill with the spear are probably of little use. If you don't mind, please accept it. Adventurer experience. चल कुछ तो काम का मिला इस बंदे से बात करके.
Chalo, Midori. Traveler. Did you get the traveler? This is from Mr. Ramsey. Travel around Java in 80 days. Wow, thank you. Let me have a look. How come this is so thin? The other travelers are much thicker. He hasn't finished yet. Is that so? I'll wait and read it when Uncle Ramsey is finished. Then I'll have a new story to tell Koichi. Thank you, traveler. These are for you. Please accept them. Chalo. हाँ वो स्ट्रेंज पिक्चर्स के बारे में पूछ लेते हैं. This is quite the headache. Would you know anything about this map? Judging by the topography, I'd say this is someplace on Sere Island. How could you tell? The guild has commissioned several expeditions to Sere Island in the past. The adventurers who accepted those commissions would bring us intel on the island in form of reports. Unfortunately, manpower issues have prevented us from launching large-scale expeditions, so we're stuck sending a few adventurers at a time to explore the area. I'm afraid that this limits the extent to which I can continue helping you analyze this map. However, I do know someone who might have more to do with Sere Island than me. His name is Oda Taru. I heard that his ancestors used to live on Sere Island before migrating here for various reasons. Speaking of which, he did come to the guild some time back to hire some adventurers who would accompany him to Sere Island to see the place. You can ask him about this map. With any luck, he might know something about it. ये कौन सा क्वेश्चन चालू कर दिया मैंने? When will I find someone who'll accompany me back there? Would you know anything about this map? Are you an adventurer with the guild? Can they really spare the people? I'm just a passing traveler. Fine then. What's this map you spoke of? Now let me see. This, could it be? What did you see? Isn't this Sere Island? That it is. Ding ding ding. Correct answer. Haha, is it really? I just guessed. Although my ancestors lived on the Seri Island, that was a very long time ago now. By the time we came to my generation, we no longer had any impression of our old home. All we have left in the house to remind us of it are 3 landscape paintings of the island. So why do you want to go back? Well, it is still my hometown, is it not? I feel like I have to go see it no matter what. Unfortunately, I'm pretty busy running my business at the moment, so I haven't the time to go. Additionally, I had some trouble finding adventurers willing to escort me to Seri Island. So I went with option B, putting up a commission at the Adventurers Guild. Hopefully, some adventurers can help me go to Seri Island, find the 3 places shown in those paintings, take a few pictures with their camera, and bring those pictures back to me. But no one's picked up that commission thus far. I can go there for you. Would you really? That would be amazing. As for the payment, you need not worry. I will have it ready for you, for sure. Well then, our traveler, I'll be counting on you. Including the map you brought, that would make 4 locations to take pictures of. Well then, traveler, please head to these 4 locations and snap a picture of each of them for me. Sere Island. ये वातात्सुमी है और ये सेरे है. सेरे.
ये देखते हैं। एक का तो पता है मेरे को। जैसे एक ये है। Time to go. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. One with nature. Barely a scratch! Barbados, guide us. The wind knows it. Wind strategy. चलो ये Pleasant surprise. ओहो Back off! One with nature. Let's light it up! ये कर दिया ना सॉल्व। A fateful offering. Time to go.
ओके इधर भी है। I'm going in! Go as well! Wind, hear me! Can't run! I miscalculated. You can't. That hurt! Let's light it up! Out of my Time to go. sight. Back off! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Wind strike! As one with wind and cloud! I swear by my sword! Mirror images. Winter shall eventually come. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Wind strider! Go as well. Into the wind! अनलॉक हो गया। Brings a smile to my face. Where sword and halberd meet, your treasure doth you wait. Where sword and halberd. ओके ये इसी का एक क्लू था। मेरे को लगा ही था कि उनको एक डायरेक्शन में करना रहेगा। Hi Ranveer. Follow the wind. Time to go. क्या कर रहे हो? मैं आइलैंड पे भटक रहा हूँ Time to फोटोज खींचने के लिए। मिशन कर रहा हूँ मैं, मिशन। परसों पेपर है, ऑल द बेस्ट। तो गेम क्यों देख रहा है? पढ़ाई कर। मैं अगले हफ्ते भी गेम खेलूंगा, तब देख लियो। पेपर ज्यादा जरूरी है। What is displayed when similar seals are activated? तैयारी हो गई है? चल बढ़िया है। हाँ तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहा होगा। किस चीज का पेपर है?
आज मोबाइल पे खेल रहे हो कि पीसी? पीसी पे खेल रहा हूँ मैं। पीसी पीसी। Who says there aren't benefits to a life of wandering? पंजाबी? और पंजाबी तो तेरे को आती है। पंजाबी मुंडा तो खुद है, कर ही लेगा है जी। ये क्या हुआ? वही तो, तैयारी हो चुकी है। बस डिक्टेशन करनी है। The wind knows me. हो जाएगी, मम्मी को बोल, मम्मी हेल्प करवा देगी डिक्टेशन की तैयारी करने में। तो ये भी सॉल्व हो गया। Smile to my face. Time to go. Into the wind. तो भाई ये नीचे चला गया। करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। 1 2 नहीं, अच्छा मैचिंग पैटर्न है। Who says there aren't benefits to a life of wandering? Wind strike. Back off.
Where have you been hiding? One with nature. Clouds high. The birds call. Time to go. ये खुल गया. Who says there aren't benefits to a life of wandering? ये क्या है? अच्छा, ये वो शिप वाली जगह पे जाने के लिए. Compared to the storms I've encountered out at sea, this is really quite tame. Davy Jones locker. Full offering. Time to go. Oh, oh, oh. Okay, nice. Nice. Brings a smile to my face. Time to go. Wait, hear me. Eyes on me! I'm going in. Fallen leaves, adorn my night! What a pleasant surprise. Back off!
ये हो गया अनलॉक। I swear by my sword. ये वाला क्वेस्ट आई थिंक थोड़ा लंबा जाएगा, इसके लिए पहले पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आई थिंक ये लास्ट मिशन हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मैं गेम आज की स्ट्रीमिंग खत्म करता हूँ। The rain won't slow me down. वेट करना है टाइम का। यासुमोतो, क्या हाल है भाई? थैंक यू। आई एम सॉरी इफ आई कॉस्ट यू एन इनकन्वीनियंस। नो, इट्स फाइन। I have mixed a new remedy with the herbs you gather, but I don't have any test subjects to assess the efficacy of the medicine. Can you please help me straightforward? Handale, can I ask you to witness the efficacy of my new remedy? The new prescription is still unstable, and there's no way to foresee the worst consequences. So I hope at least someone can witness my success. Or help me deal with the consequences if the worst comes to the worst. Yasumoto drinks the medicines. Blah. Are you alright? Well, it tastes bitter and my tongue has gone numb. Local paralysis might be caused by the Tatarigami. It tastes horrible but seems harmless. It may take a long time to observe the side effects of the medicine. I don't know. Hey, they're coming towards us. Tandalai, get rid of them. Oh, ये लोग कहाँ से आ गए? Go as one. Let me try my Teamwork is dreamwork. Into the wind. Oh भाई साहब. Clouds high. The birds call. the fairy. Go as one. Let's get down to business. Back off. To ashes. Barbados, guide us. Go as one. I'm going in. As one with wind and cloud. भाई कितने आ रहे हैं? Let's light it up. Everybody stand back. Fine. One with nature. Wind, hear me. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Adventure time. Phew, my heart almost jumped out. Thank you for saving my life. I won't forget it. This is a normal phenomenon. Living beings affected by Tatarigami will be unconsciously attracted to inauspicious energy. Because this remedy is saturated with Tatarigami energy, it's normal that it would attract them. Phew,
Anyway, I know how to improve the remedy now, but the last failure wasted some fresh herbs. I need some more herbs to continue with my new remedy valuations. In your upcoming journey, please watch out for any useful herbs on the island. Just leave them in the bamboo basket in front of the house in the mornings. Sunday, if it's fine. If you're busy, it's fine if you're busy. Maybe I can find someone else to help. You got it. Goodbye, traveler. I hope you will have a safe journey on Yashiro Island. चलो एक और क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया हमने और आई थिंक इधर एक और क्वेस्ट है हाय जी Don't stand too close to me. हेलो एक्सक्यूज मी आउटलाइनर could you hear me out what's up please don't linger on this island for too long recently the Tatarigami's reach has spread wider and wider since the people from Sangonomiya destroyed the ward that suppressed the soul of the serpent god, the Tatarigami has spread across the island. As you can see, the sky is now perpetually clouded and the rain won't stop. This is all because of the Tatarigami. Recently, one by one, all the miners have fallen ill, gone insane, or fled to other islands. Everyone's gone, there's hardly anyone living on this island anymore. Ironically, due to the chaos created by the Tatarigami, the shogunate and the rebels have not been fighting over this place quite as hard. But if they had not destroyed our great Ogosho's ward, the island wouldn't have become such a mess in the first place. What do the commissions or the dragons or serpents have to do with me, huh? They never asked my opinion before starting this cursed war. Then why are you still here? Why? Because this is my home. Oh माँ कसम बेनी उड़ के उधर गिर गया. Because it's my home. What about your family? They're in a safe place, but thanks for your concern. They must be waiting for me to come back to them here. No one on the island left voluntarily. We are a family here. Anywhere else we go, we'll have to work for someone else. But someone had to stay and clean up the mess so that everyone can return home eventually. This is such a headache. Is there anything I can help you with? If it were any other child offering to help me out of the blue, I'd be laughing out loud right now. But seeing as you're a traveler from afar who has managed to venture this deep into Inazuma, you must certainly be able to hold your own. I'll get straight to the point then. The ward over there has been bothering me for a long time. Maybe you can find a way to repair it. I'm sure this awful weather can only be due to the ward's destruction. But please be careful. When you approach the ward, if you stare at it, it will release a burst of energy towards you. It's harmless but very uncomfortable. It feels like it's rejecting you. But I think the ward is missing some components. It can probably be fixed by putting the missing parts back. Of course, that's just speculation on my part. I still can't say for sure what's gone wrong. If you want to help, please help me fix this ward. But if you can't manage it, then like I was saying, don't stick around here for too long. Oroboshi's Legacy Prologue. You gaze at the ward, and suddenly a strange energy flows towards you. You realize that it is not resisting you, but asking you for something. Seems something to be missing from the ward. Best to look around the area for missing parts. Use your elemental sight to scan for scattered traces of elements nearby. Maybe you'll find something. Garrison log fragment. It's sunny and the sea breeze is refreshing. How unfortunate. Then we are stationed out in the middle of sinking nowhere.
Apparently, the transfer were made at the request of Lady Miko. Still, we are the samurai of the Tenryo Commission. After all, not the Grand Shrine's guard. Lady Miko may have greater seniority than our Lord Pujo, but such behavior is quite unreasonable. That said, the new equipment is quite good, and this notebook is waterproof. It's cloudy today. The rain is imminent. The Onmyoji from Narukami Island conducted a routine maintenance ceremony. Before they left, they gave us many sakura mochi as a gift. Thereof the Kamisato clan make. I believe most delicious. Sanboshi's at the age where his teeth are growing out, isn't he? I'd really love to make some desserts for him, but I wonder if it's too late for me to learn. Heda said that he's discovered some abnormal movements on the western beach, and that it might be the Kairagi. The Sangonomiya are so weak, how can they just let pirates run amok on the western sea? They may have been getting along well all this time, but they shouldn't be so complacent. Thunderstorm. It's been raining heavily today for some reason. There's thunder and lightning everywhere. We can hardly tell whether it's day or night. A faint, sad voice can be dimly heard in the thunder. Scary. Old man Hachino said this is happening because the Gosho is enraged. What nonsense, Inazuma. What nonsense, Inazuma. Inazuma is a peaceful place. What reason would the Ogosho have to be angry? We can't find Heta anywhere. Once this storm is over, he shall have to be punished. We can see a stream flames amidst the rain. The contents end here. Adventure time! इधर आ रहा है Adventure time! Adjust orientation. I think ये ब्लॉक हो रहा है तो एडजस्ट एलिवेशन Let's light it! One with nature!
ये नीचे की तरफ किया। क्या करना क्या है? Compared to the storms I've encountered out at sea, this is really quite tame. चल एक तो इधर है। Time to go. I follow the wind. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. ऑनलाइन मैंने पढ़ा, उनके हिसाब से इनको एक दूसरे को पॉइंट करना है। ठीक है, इनको एक दूसरे को पॉइंट करना है, तो ये पॉइंट करेगा उसको। ठीक है, मेरे को भी लग ही रहा था कि ये उसको पॉइंट करने के बदले एक दूसरे को पॉइंट करेंगे। ठीक है, अभी एडजस्ट एलिवेशन।
ये पॉइंट करेगा नीचे वाले को। आई थिंक इसका एलिवेशन ठीक करना है। ये अब कर रहा है इसको, ये कर रहा है इसको। ये कर रहा है इसको। Time to go. आई थिंक ये ब्लू डोम की तरफ ही वाला है। ये इसको मारा, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, ये डोम को मारेगा। हो गया पजल सॉल्व। Time to go. इधर है ये। Into the wind. Back off! Teamwork is dreamwork! I swear by my sword! Wind strike. As one with wind and cloud. Eyes on me! ओके, ये इधर के लिए है। एक मिनट। All right, we got it. Time to go. एक मिनट। ये इधर के लिए था। The wind knows me.
Submit item. The stone lamp lit it up. भाई वेदर ठीक हो गया इधर का. Time to go. क्या बात है? Not bad, Outlander. The clouds are almost gone. It seems as though my guess was correct. Next, the two wards at the serpent's head and Jakutsu mine still need to be repaired. If you don't mind, I'll leave those two wards to you too. You got it. Thank you very much for your help. Although I am by no means a man of wealth, I promise that you will be paid fairly. I still don't know when it'll happen, but it seems that the time for my reunion with family and friends is drawing a little closer. By the way, you can find me on the west side of the island once you're done. Port Mume came under a rebel assault previously. I suspect that the attack is related to those changes. चलो ये कर दिया. प्रीमो जेम्स भी मिल गए. सही हो गया. चलो आई थिंक स्टोरी क्वेस्ट आज के लिए इतना काफ़ी है. मैं अभी देखता हूँ कि मेरा रेपुटेशन के क्वेस्ट अनलॉक हुए कि नहीं इनाजुमा के अंदर. आई होप हो गए होंगे. Time to go. अभी भी अनलॉक नहीं हुआ. क्यों भाई? तो जरा सा और चाहिए. नहीं अभी अनलॉक तो करना है. 30 चाहिए. 30. गवर्नमेंट ये सब 20 के है भाई. यार कितना काम करवाएंगे ये लोग. ये पूरा आर्कॉन क्वेस्ट कंप्लीट कराएंगे क्या? गौरमे वाले. ये तो मैंने कर दिया. डिलीट. चल ये मैडम का भी कोई क्वेस्ट है. ये कर लेते हैं. Ah, traveler, what are you doing at a place like this? At a place like this, at a moment like this? You really are an unlucky one, aren't you? If you came here to enjoy the view of the Sakura, now is categorically not the time. So please don't get your hopes up. We used to have a lot of visitors coming here for the Sakura, but no one wants to come here these days. Not with all the fighting going on. That's a bummer. It's a little more than a bummer. It's an absolute tragedy. Seeing the damaged condition that the Thunder Sakura are in fills my heart with grief. Also, when I went to inspect them earlier, something about them just didn't seem right.
Don't get too close to the Thunder Sakura. It could be dangerous. Please be careful. What's the big deal with Thunder Sakura? You don't know the first thing about them, do you? Small wonder, I suppose, since you're not from the shrine. You've probably seen the sacred Sakura at the Grand Narukami Shrine. That's a symbol of the great Narukami's power. The great Narukami is eternal, just as the sacred Sakura will always be in full bloom. Beyond the shrine, in Kanazuka, you will find Thunder Sakura. They share a common origin with the sacred Sakura and possess a similar power too. Recently, however, the Thunder Sakura have been damaged, and they are not producing blossoms. It cannot be a good sign. It alarmed Lady Miko enough that she sent me to Kanazuka to investigate. So far, I've discovered a group of treasure hoarders who keep showing up near the Thunder Sakura. They seem very suspicious to me. I must find out what their connection is to all of this. However, put it bluntly, I'd be hopeless in a fight, and these treasure hoarders look particularly fierce. Traveler, I'd like to ask you to investigate their camp and find out what they're up to. I initially thought that I'd be more than capable of handling the investigation on my own, but now it's It's less straightforward than I'd imagined, so all I can do is ask for your help. Thank you, Traveler. Ah, we found a treasure hoarder camp. Wait a minute. That thing that looks like a electro hypothesis you've seen before. Here's the treasure hoarder camp. If they don't like that up to no good for so suspicious. Let's go ask one of them. Guess we'll have to do the normal thing. Let's beat them up and then ask the last guy some questions. Let's light it up! You're open! Hideaki, please don't kill me. I had nothing to do with the Thunder Sakura, I swear. And how did you know that we were here about the Thunder Sakura stuff? Guilty conscience, much? I'm on bets. You got this electro-hypothesis like thingy from some dirty business, didn't you? You? What's that got to do with you, huh? Well, it's my job. That's right, we've been asked to right wrongs and see justice done. Out with it then. We'll have you tell us everything the treasure hoarders intend to do with the Thunder Sakura and where you got this thing from. If you don't talk, well, you taste the super formidable bite of this traveler's sword. I'll talk. But it's not as if anyone cared about these trees anyway. Can't a man and his brothers make some money off their power? We had a big shot buyer who was interested in these trees, and they even provided us with the means and tools to extract their power. As long as we did as they said and open a gap in those trees, we could use those tools to collect the Thunder Sakura's power. Then all we need to do was direct that power into this crystal, and hey, presto, we'd have something worth 3 Tenryu Commission mansions. They gave us a huge sum of money too, and not a small sum you small timers could ever spend in your life. If you'll just let me go, I'll give you a share, 10% to you and 90 to us. How's that sound? Too little, buddy. What? You know what? I'm done letting you off go easy. Once our buyer gets here, you will be the one begging for mercy from Lord Hideaki over here. You sure know how to talk big, eh? Listen, you cocky little imp. My brothers are coming here to rescue me any time now. It doesn't seem who you call or how many you call. You won't touch a hair on Paimon's head before the traveler sends you all running. Yamada, did you hear that? This little pipsqueak said you can't hurt her. You gonna take that lying down? Yamada, who's that? Traveler, quick. Huh? There's no one here. Hideaki takes the opportunity to slip away. Darn that Hideaki. Give us look, but we've got enough info for now. Let's go tell that shrine maiden that that's a bit more important.
This creature seems to be related to the electro hypothesis you encountered before in Mondstadt, but it does not react at all as you approach. Perhaps it is in deep slumber. You know not what caused it to appear here, nor do you know when it will awaken. It may be safest to keep your distance for now. Have you made any discoveries about Hideaki? So that's what's going on. But treasure hoarders are just petty thieves. Could their juvenile antics really cause this much havoc? I suspect there must be other reasons why the Thunder Sakura are withering. I have my suspicions, but I can't say for sure. What do you mean? This is Kanazuka, when neither Inazuman faith nor Fangonomias has any influence. Ever since the Vision Hunt decree, Hi Ranbir. Ever since the Vision Hunt decree was promulgated, conflict often breaks out here between the Shogun's army and the rebels. I don't think either side cares whether the Thunder Sakura becomes collateral damage in their war. To quote Lady Mako, honors and accolades are all these military types care about. They will not listen to reason. We are well prepared for this, but we hadn't expected the Thunder Sakura to be in quite as terrible condition as they are now. Anyway, here and now, the most pressing matter is to put a stop to the treasure hoarders' juvenile antics. Traveler, can I entrust this to you? Sounds you got it. Please don't get careless. The Thunder Sakura being weakened makes the situation very dangerous indeed. After all, these trees serve to suppress the one who lies beneath. I've said too much. Please forget you heard me say that. In short, please exercise extreme caution. I also need some time to walk through my findings. One major outstanding question is, who is directing the treasure hoarders behind the scenes? This case is becoming more and more complicated. भैया विंचेंजो बहुत तगड़ा लगा. वो था ही तगड़ा. Off we go. We've got Adventure time. Off we go. How about we use some elemental spell? Off we go. ये क्या है? Why do they never miss? जब उसकी मम्मी की डेथ हुई थी सच्ची उसने वाट लगा दी थी सबकी. बहुत सही सीन था उसके बाद का. सीधा अंदर जाता है बंदूक लेके, ठाए ठाए ठाए. अब तेरे को मैं इधर नहीं मारूंगा, तेरे को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा. Wind, hear me. Just a scratch. That's got to be a good sign. A fateful offering. एक सेकेंड. Going in.
लास्ट एपिसोड में वो मर्डर करके आया था, हद ही गई। भाई कोई पंगा नहीं ले सकता उसके साथ। Time to go. Go to the quest menu. Time to go. यार ये तो लंबा क्वेस्ट हो गया यार। मैं तो सोच रहा था कुछ छोटा सा सिंपल सा क्वेस्ट मिले। Actually, do you know where the Thunder Sakura are? Looking at your reaction, I guess you're unfamiliar with the Thunder Sakura location. Well, you're a traveler from abroad. I should have guessed as much. The 5 Thunder Sakuras are not difficult to find. You will have to follow the western shoreline, and the northmost point of Kujo encampment is led to the northmost points of Tatarasuna. You'll encounter 3 of them that way. As for the other 2, one is in the mountain northwest of Tatarasuna, and the other is on another mountain to the southeast. Knowing the direction should make things easier on you. I'll leave the matter of the Thunder Sakura to you. Please be careful. भाई इसने तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन पकड़ा दिया। Time to go. एक ये रहा, एक वो लग रहा है। Time to go. Back off! Back off! Men, fall back. A fateful offering. The wind knows me. Wind strike. Fallen leaves. Adorn my... Barbados, guide us. भाई वन पीस भी तगड़ा है मानता हूँ, पर लेकिन लंबा बहुत है यार। टाइम नहीं है यार देखने के लिए। 800 एपिसोड्स। फनी है मानता हूँ, फनी भी है, एक्शन भी बहुत तगड़ा है उसका, बट भाई 800 एपिसोड बहुत होते हैं। छः 605 पे है। 605 देखने का टाइम निकल गया तेरे पास से। भाई किधर किधर है लोकेशन?
एक बोल रहे हैं कि पीछे की तरफ है। अब 997 हो चुके हैं वन पीस के एपिसोड। 6 महीने से देख रहा हूँ भाई, 6 महीने। भाई जिंदगी का लिटरली 1 साल चला जाता है देखने को, और फिर भी खत्म नहीं होता वो। हाँ 9 महीने 9 महीने। नाइन नाइन समझ गया। 9 महीने, 3 महीने और कर ले, 1 साल हो जाएगा। भाई तू तो खत्म कर देगा, बंदा खत्म हो जाए देखते देखते। अब मुझे समझ में आया कि वो बेस्ट एनीमे क्यों हुआ। हाँ इसीलिए तो उसको टॉप 3 में माना गया है। भाई फिलर, स्टोरी इतनी बड़ी है, पूरी स्टोरी फिलर है। अरे वो रहा थंडर साकुरा। Into the wind. Time to go. ये रहा। Back off! Huh, where have you been hiding? भाई तुम लोग इतना टाइम लगाते हो स्पॉन करने को। The wind knows it. Everybody stand back! Into the wind. Who says there aren't benefits to a life of wandering?
Time to go. और एक कूजो एनकाम्पमेंट के सामने बोला था उसने, तो सामने तो इधर ये रहा। Back off! क्या बात है, हो गया। Nice. I'm starting to lose count. ये रे, मेरे को याद था ये थंडर साकुरा के पास थे गौरमे वाले। To ashes! अभी एक लास्ट बचता है। Nice. I'm starting to lose count. चलो इनका स्टार्ट कर लेते हैं क्वेस्ट। This dish certainly does have a very Juliesque feel to it. In fact, the first time I saw it, I thought it must have come from Mondstadt, but it turns out it's a local specialty instead. I bet it tastes just as good as it sounds. Zudong, come here. Let's make some more, please. We meet again. Oh, it's you, traveler. See, what did I tell you about us meeting again? Judong's picked a new recipe from the city. It's called crab roe kurayaki. Pretty good name, hey? It's not that hard to make either, but it does require a great number of crabs. I've prepared some normal crabs. Now I'm looking for some special ones. Special crabs? Exactly. In specific, we are going for the ones that dwell under the Thunder Sakura. You might as well say thunderstruck crabs. Well, I'm just curious, you know. I wonder what crabs that live under such circumstances will taste like. However, with lightning flashing all around that tree, I daren't get too close. My book states that just like before, you just need to touch a Thunder Sakura bow and cause an electrogram to attach to you. That way you wouldn't be struck by lightning from the Thunder Sakura. But well, you've seen what the tree looked like. I'm not going to risk it based on such rough summary of a solution. Wouldn't it work if we just ran fast enough? Are you daft? You think you can run faster than lightning? Well, why don't we just use a stick to pull those crabs out and stuff? If you ask me, we might as well dig some ditch nearby. That will draw both the water and the crabs out. Aha, everyone's got their own opinion. That's great, that's great. If you don't mind, traveler, could you help us catch a few of the crabs that live under the Thunder Sakura? If you do, I'll whip up a great feast for you as thanks. And yes, hang on, take this way. If you're going to catch crabs over there, use these to attract them first. It should save you some time and effort. The crabs that live near the Thunder Sakura, I wonder how they'll taste. Let's go grab them. हमने वैसे थंडर साकुरा को सबड्यू कर दिया, तो दोनों क्वेस्ट एक तरीके से कनेक्टेड ही है।
Ah, traveler, how goes the crab catching harvest? Oh, this crab looks pretty good. You're a dab hand at this, aren't you? Well then, since we've got all our ingredients, let's begin cooking post haste. Let me prepare for a while, traveler. Please wait here. Zudong starts cooking. Kuroyaki. Why is it called Kuroyaki, I wonder? Well, guess we'll make it first and ask questions later. Oh, here we go. Crab roe Kuroyaki. I'll have one. This is great. Give me one of the smaller ones. I doubt I'll be able to finish one that's too large. And this serving's for you, traveler. Why don't you have a copy of the recipe too? This shouldn't be too hard to make. This dish shouldn't be too hard to make. You can try it yourself if you like. We'll probably head for the vicinity of Yashisori Island next. Go look for us there if you've got the time. Alright. Time to grab a bite for myself, eh? Hey Julie, leave one for me. ये क्वेस्ट कितना जल्दी हो गया और वो श्राइन मेडन वाला इतना भारी है इधर उधर. पहले ट्रेजर होल्डर को मारो फिर बाद में ये तातरा सुना का करो. इधर है वो लास्ट टरी. भाई वो तो नहीं. नीचे नहीं है, ऊपर है. ऊपर इधर से जाना पड़ेगा. तू कहाँ से आ गया? Wind, hear me. Clouds high. The birds call. Back off! Cheap tricks. I swear by my sword. You win. Yeet Queen. Yo, nice. The wind knows me. The wind knows him. War at last, thunder fucker.
This has been restored. Nice. I'm starting to lose count. Let's report back to Yuki and finish this God of Request. बहुत लंबा क्वेश्चन था 20 पॉइंट के लिए. How is the situation with the Thunder Sakura? The juvenile antics have been dealt with. Wonderful. That will at least stabilize the condition of the Thunder Sakura. I'm sure Lady Miko will be also relieved. How dare those crooks brazenly seek to steal the power of the Thunder Sakura for their own gain? Their actions are unforgivable. He also mentioned that the treasure hoarders have some sort of crystal cube at their camp with which they are trying to collect the Thunder Sakura's power. That is incredibly dangerous. It must be dealt with as soon as possible. You've already helped me out enormously, so I couldn't possibly ask you to deal with this all by yourself once again. I will join you this time. There's no time to delay. Let's go. अरे अभी तक खत्म नहीं किया. कितना बड़ा क्वेस्ट है ये? कितना टाइम पास करा रही है ये? पैसे दे. इतना करने के बाद भी पैसे दे तू. आर्कॉन क्वेस्ट बनाओ इसको. फतुई भी आ गया. So it's a meddling maiden from the shrine getting in the way of our money making. Money making? You scoundrels! How dare you have designs on the Thunder Sakura? Lady Miko will not let you off so easy. Big dog, you're forgetting who you're messing with. Traveler. Masha, that traveler over there is the one who's been getting in our way. Our deal's gonna be in jeopardy if you don't help us out here. Oh, dude, hey, here, you're going to act all tough in front of me, small fry. मार इसको. मार दूंगा मैं. चल. चल. चमन. चल. Teamwork is dreamwork. Send this quickly. Falling leaves. Adorn my night. With nature. Barbados! Barbados. Let's light it up. Wind strider. This isn't good. Time to go. Let's light it up. Back off. I'm going in. Clouds high. The birds call. This was well done. Let's light it up. Skull and splash. To ashes. I swear by my sword! You need to hurry up. Roast, fry. But unfortunate. हमसे लड़ेगा. हमसे लड़ेगा. Ah, just my luck. Bumping into this kind of opposition. You shameless villains conspiring with the Fatui. Don't go thinking that you've got the best of me. Just because you successfully interfered with my business, I still have an ace up my sleeve. भाई अब इससे भी बॉस से भी लड़वा लो तुम. हर एक चीज से लड़वा लो तुम लोग. Awakened hypothetical. You're वो उसके पीछे गई, हमको इसके पीछे छोड़ के चलेगी. तू लड़ना थंडर साकुरा से. बढ़िया ही. Everybody stand back. Let's light it up. Let's light it up. Off we go.
Adorn my night! I always bounce back. Just watch me. Wind Strider! Teamwork is dreamwork! Go and splash! Let's light it up! Let's light it up! Wind Strider! Let's light it up! Everybody stand back! Why do they never miss? Back off! Wind, hear me! Clouds high. The birds call. Let's light it up! Off we go! Teamwork is dreamwork! And you're gone. अरे यार एक रह गया. Let's light it up! Go and splash! Wind Strider! Everybody stand back! Done. Stop chasing me, please. We've run this through 3 times. I can barely walk. You lowlights consorting with the Outlanders for profit. There would be no mercy for you, even if we ran another 10 rounds. From the relaxed look on your face, traveler, I assume you've dealt with that little problem. Thank you very much. The Thunder Sapler's power cannot be allowed to fall into the hands of these types, much less be handed over to the Fatui in the Staros. It is hard to say what the Fatui have planned, but since we've captured this little lackey of theirs, I will be sure to get some answers from him. Leave the cleanup to me. The Shogun's army's positions are well known to me. This man will not escape. Finally complete हुआ पता है? Finally. Sakura Aborism. I literally abhorred this quest because of its length. I just wanted a simple quest Let's light it up! Another test to unlock the bounties. Go and splash! But I think finally My sword! हमारा bounties unlock हो जाना चाहिए. बस इन लोगों को एक बार हरा लूं, फिर चलते हैं. Wind knows me. Picked the wrong test subject. Time to go. हाँ भैया जी, क्या कर रहे हो? Time to go. Kicking me off. Teamwork is dreamwork! As one with wind and cloud, one with nature. Picked the wrong test subject. ये क्या है? Let me try my blade. The perfect distance. Into the wind.
चलो नाइस. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Lucky days. Time to go. Let's get down to business. One with nature. Clouds high. The birds call. Into the wind. You! Finally, Let's light it up! Everybody stand back! Go and splash! Barbados, guide us. Barely a... You win this battle. Back off! रे में फिश के लिए है ये. एक ये हो गया. Nice. I'm starting to lose count. हो गया. ये भी हो गया. Where have you been hiding? चलो अभी ग्रैंड नारुकामी श्राइन चलते हैं पहले, फिर कामिसाटो एस्टेट पे जाके बाउंटीज अनलॉक करने के बाद गेम फिनिश करते हैं आज की. आई होप आप लोग मेरी स्ट्रीम देख रहे हो, अभी नहीं तो बाद में कभी जब देखोगे तो पसंद आएगी. और जितनी मुझे ये गेम पसंद आ रही है खेलने में, उतनी आपको भी खेलने में पसंद आए और खेलते हुए मज़ा भी है. क्योंकि कभी कभी ग्राइंडिंग थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम दैट वी हैव हैड टिल येट. ओहो, 2 विशेस भी अनलॉक हो गई है और इलेक्ट्रोग्राना का लेवल अप भी हो गया. ओ 25 पे क्राउन मिलेगा. नाइस. काफी फ्रूटफुल और इवेंटफुल था ये. अभी जा रहे हम कामिसाटो एस्टेट. ओ भैया जी, ओ भैया जी, यहाँ क्यों है भैया जी? हमको अभी तो दे दो क्वेस्ट. भाई गौरमे वाला हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ. भाई कितना काम करवाएंगे ये लोग अनलॉक करने के लिए. हद है यार. भाई पौना घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए. 3 घंटों से मैं भाई अनलॉक करने की ट्राई कर रहा हूँ. Kiminamiana, what can I do for you? What happened? Great, you have perfect timing. Do you remember the recipe you wrote for me last time when you and Miss Kamisato came to my store? Ah, that pizza was so popular that many customers came to the store to order it specially. But some customers also said they were bored of eating this pizza all the time and asked if there were other pizza flavors. Although I have tried several methods to make new types of pizza based on feedback from customers, but I always feel that something is lacking and the response from customers are not very good. Maybe I'm really not good at making pizza. Traveler, you know a lot about this dish, right? Can you give me some advice about the customer's feedback? Do you want to take a look at the customer's feedback? Give me a moment, I'll look for it.
Miss Matsumoto said that although the pizza in my shop incorporates a lot of ingredients from Inazuma, she heard that Mondstadt pizza is not made like this. She said that for such outland delicacies, it's better to retain its authentic flavor. But how am I going to know about how to make Mondstadt's pizza? Traveler, please help me, ask her. Matsumoto the gourmet. Is there anything in the world that would satisfy my taste buds? How about Kiminami Restaurant's pizza? Oh, the pizza you mentioned tastes really good, and it has a lot of local ingredients. However, I tried the authentic mushroom pizza before. I remember that the pizza was made of cheese, cabbage, mushrooms. Haha, I just feel that such outland delicacies is it's better to read for such outland delicacies. It's better to retain its authentic flavor. चलो किमिनामी आना को जाके बताए प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स. लास्ट टाइम मैंने मजाक मजाक में एक फालतू इंग्रेडिएंट बोल दिया था उसको. ये कहीं उसका ही नतीजा ना हो. You've returned. How did it go? Got any feedback? About the customer's feedback. The original mushroom pizza. It's worth a try. The ingredients to prepare are cheese, cabbage, and mushrooms. We have the other ingredients, but we usually don't stock up on cheese. Traveler, could I trouble you to get a block of cheese? I'll take care of it. We don't really use cheese in the store. It's not that we use it at all. We just use it very rarely. पिज़्ज़ा बिना चीज के पिज़्ज़ा नहीं होता. तो पिज़्ज़ा इतने टाइम पे बना कैसे रही है? After all, there are not many dishes in the store that require cheese, so we don't really stock much of it. Anyway, I'm counting on you, traveler. Please help to bring me a block of cheese. ले ले, ये ले. ये ले. जितना चाहिए ले ले मेरे से. पर पिज़्ज़ा ढंग से बनाइए. Thank you. These ingredients will do. The original mushroom pizza from Mondstadt. I don't know if I can make it successfully. It's done. This pizza looks pretty good. Thanks for your help, traveler. Here, these are for you. I'll make sure to savor these pizza tastes. If it's not bad, it should be officially launched as a new dish soon. Pizza from another land. भाई इससे कुछ भी नहीं हुआ. ओ भाई अभी तक अनलॉक नहीं हो रहा ये. भाई क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे अनलॉक करने को. Jai Publishing House's invitation. Rito Road. Urimi's Watch. Tatra Tales. Reminiscence of Sere.
एक्टिवेट द मैकेनिज्म, ये कौन सा है? ये वाला कर सकते हैं। One with nature. भाई कितना दूर भगाएगा तू? Into the wind. भाई पूरा मैप भगवाएगा। पूरा मैप भगवा ले तू। One with nature. Time to go. भाई ये क्या कर रहा है? The wind knows me. One with nature. इतना भगवा दिया इसने। बिल्ली का टेंपल तक ले आया ये। नमस्कार मेका सामा, लेको सामा। एक वे पॉइंट से दूसरे वे पॉइंट तक भगवा दिया इसने। Into the wind. देखना पड़ेगा कि कोई पैटर्न मैचिंग वाला तो नहीं है ये। Time to go. अगर ये पैटर्न मैचिंग वाला है
या 1 2 3 होगा। One, 2, 3. 1 2 3. What was that noise? Did you just see that? A giant hole just opened up over there. Looks like there's some basement here. Let's go in and have a look. Come on. This mechanism seems to be of the same kind as the one that we unlocked on the way in. Just, you know, more complicated. But it's fine, right? I'm sure the ancestral map I've got has some clues for us. Time to go. Each. One with nature. The wind knows me. उजीवारा का मैप। ठीक है, ये L T और 3 L T 3 3 L T 3 L T 3 Into the wind. 3 L T 3 L T 3 L One with nature. T 3 L T no तू दूर हटना, उससे हेल्प होएगी। बढ़िया ही 3 L T 3 L T महा T 3 L T 3 L T 3 L T 3 L हो गया 3TL। Yes, we've got it. I've already solved it. Are we going to have to solve it again? T 3 L 3 3
T3L. T3L. Yeah. Compared to the storms I've encountered out at sea. I think हमको कोई दूसरा अप्रोच लेना है. T3L. T3L. नहीं, T से स्टार्ट नहीं करना है. T से नहीं, L से करना है या 3 से करना है. T3L. L. अबे तू हटना यार. LT3. L. Three L T. 3 L T. 3 L T. नहीं हुआ. Three L T. 3L. तू दूर हट. एक तो बार बार रीडू करना रहता है. एक तो Wind Strider. तू दूर नहीं हट सकती. पंगे लेने होते हैं इसको भी मैडम को. थ्री L T. L T 3. L T 3. The wind knows me. Three L T. No. L3L L3T. ऐसे जाना पड़ेगा. One with nature. L3. T L T3. T3 L T3 L T3 L. The wind knows me. Okay, I think I found it. T3L T3 L T3L T3L. There's the treasure too. Why? There's only this inside. What happened? Other than this picture, there's nothing in this chest. Is this the treasure? That's so odd. I don't think we can split this. Can we? Well, how about this then?
Let's head back to my camp first. I'll provide you with the payment once we get back there. Right then, let's go. Only one picture? How strange. मैडम भाग गई है फोटो लेके. ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था पजल के मामले में. Time to go. We are following her. What is it this time? Struck it rich, did you? You. Come on now. Cut it with the nonsense. Give it up, or else we are not leaving empty-handed. What? Wait a moment. All I found was this picture. A picture? Well, we'll take that too. Come on, lads. Get her. Help me, traveler, please. भाई तुम लोग है ना आसानी से मेरे को है ना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करने दोगे. तुमको तो मैं बुरी तरह मारूंगा. अभी तो जलाऊंगा तुम लोगों को. बेनेट बर्स्ट मार. Just when did we catch the eyes of those treasure hoarders? Thank you, traveler. Let's head back to the camp. तू इधर ही पेमेंट दे वरना मेरे को और तेरे लिए लड़ना पड़ेगा. वड्डी आई. What's going on? Please halt. Could we bother you to leave the treasure you found with us? What? Did you not just fight those treasure hoarders off to protect the treasures you found? It stands to reason then it must be something very valuable. I thought I said it was just one picture. It seems we are at an impasse then. But we shall not be denied. Not after following those treasure hoarders for all this time. Attack! Hey, listen to me, will you? Traveler, help. भाई तू लड़वाती रहेगी. क्वेस्ट फटाफट कंप्लीट नहीं करवाना है तेरे को यार. मार भाई मार यार. I swear by my sword. Go as planned. Fallen leaves, adorn my night. I'm going in. मार बनी. Those people aren't listening to me at all. I already said it. We've only found one picture. Let's go. We need to get back to my campsite. Adventure time. What now? By Fatui bhi aa gaye. Hand that picture over. The Fatui? What are they doing here? It's just your ordinary, normal run-of-the-mill picture. If you want it, just take it, alright? Is there anything else? Hand those over too. Anything else? There's nothing else. Really, only found this one picture. Why would one crumbly picture be hidden by so many complex mechanisms? If we hadn't trailed those samurai, we wouldn't have found this basement at all. We are not leaving empty-handed after waiting so much. After so much waiting. Get him! Really? Traveler, please help me. यार तू मरवा यार. तू इनको मरवा तू. Why doesn't anyone believe that this picture is all I found? I mean, you've got at least let your victim tell you what they've got while you're robbing them, right? Let's just go. Alright, let's just get back to my camp. I've had enough of this. तू मेरे को पिक्चर दे दे और कट ले तू इधर से और पेमेंट दे दे मेरी. Meow? Who is it this time? Please. I just found this one picture. That's all I found. Honest. Oh, Billy of them. I'm sorry. I'll never go looking for treasure ever again. It's just a cat. Is it? भाई एक और होता ना मैं मार देता बुरी तरीके से उसको. Phew, at least we are back at last.
Hold on for a moment while I get your payment ready. भाग मत जाइयो. That should do it. This isn't much, but please accept it. This treasure hunt show turned out to be a mess, and all that for a single picture. Why would my ancestors set up so many mechanisms just to protect one picture? I don't get it at all. Maybe I should bring this picture back to Inazuma City and ask around a bit. Maybe I should go ask Mr. Oda Toru. It has to be treasure. Time to go. Inazuma का reputation finally unlock हो रहे quest. ये लड़ने की वजह से quest के पॉइंट से वरना नहीं होता था. Reputation level 2. Requests. Bird eggs. 15 mint. Drive those rituals or bounties. Coin. ये चाहिए, ये ग्लाइडिंग फैन, ग्लाइडिंग स्पीड जो इंक्रीज करता है, और ये विंग्स ऑफ द स्टॉर्म राइडर, ये इलेक्ट्रोप्लस रेजोनेंस स्टोन, फाइनली हमने अनलॉक कर दिया. It's been so long. There are still documents that need to be seen by. आई थिंक यहाँ पे स्ट्रीम को बंद करना अच्छा रहेगा. काफ़ी स्टोरी क्वेस्ट कर लिया आज के लिए, बाकी स्टोरी क्वेस्ट बाद में खेलेंगे. तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, और अगर मेरी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बटन दबाओ, और अगली वीडियोस के लिए पता लगने के लिए तो सब्सक्राइब बटन भी साथ में दबा दो. तब तक के लिए आई होप आप लोग आराम से रहो, ठंडा लो और अपनी लाइफ एंजॉय करो.